All right, let's start with today's session. So today we are going to learn about a library that is called ipywidgets. Okay. If more people will join, then I will also tell you guys about web scraping. This is quite an important concept in Python and in basically with respect to scraping data and with respect to collecting information from any website. So we will be discussing it if there are more people. But IP widgets, we are going to start with this library. So widgets are basically they are the eventful objects. जैसे कल हमने सीबॉन की हेल्प से 2 बटन्स बनाए थे एंड आई कुड इंटरचेंज बिटवीन बार चार्ट एंड स्कैटर प्लॉट. So there is a completely different library which is devoted to do the same. जिसमें आप क्या कर सकते हो जैसे किसी भी वेबसाइट की रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें बटन्स हो सकते हैं, स्लाइडर्स हो सकते हैं, जैसे ब्राउजर्स में टेक्स्ट बॉक्स होते हैं. सो ये सारी चीजें, ये सारे विजेट्स आप अपने नोटबुक्स में इंक्लूड कर सकते हो. ओके. So, in order to get started with this library, though it is a very vast library, we are going to see a few functions that will come really handy while creating widgets. So, in order to get started with it, you guys can import IP widgets and you can define an alias for this library. I'm going to call it widgets. Let's start by a very simple widget, and this is a slider. So widgets dot int slider is a function that you guys can use to to construct an integer slider. अब इस slider में you can provide a minimum and maximum value as range. Okay, let's have a look at the slider. So you can see that minimum value is 100 that is 10 that I got, and maximum I can slide it up to 100. Okay, any value I can get between these two numbers. So this is a simple slider. Right now, it is not achieving anything for me, but I have drawn it for the sake of demonstration. Just like this integer slider, we have sliders for different data types as well. So we are going to have a float slider as well. You guys can have a look at these functions. Like for different data types, we have different kind of sliders. Now this slider, it is not interactive at all. So what I'm going to do, I want it to have a particular purpose. So to do that, we are going to use the function widgets.interact. And what this interact function can do, it can either basically it is going to take two arguments. One, you can pass a slider, and secondly, you can pass another function that is going to serve some purpose for you guys. So for now, creating a simple lambda function which will take one argument and it is going to multiply that argument, let's say by 3. ठीक है, एक simple सा function बना लेते हैं. Then there is a parameter that is x, and inside this parameter I am going to pass my integer slider. So इसी slider को pass कर देते हैं. Now we have a min range, a max range. एक और parameter होता है value, उसके बारे में भी देखेंगे, but first let's run it. So here what do you get? We get that now our range, it is starting from 10, it will go till 100, but जो भी number पे I'm going to slide, I will get a resultant value multiplied by 3. Okay, so this is an interactive slider right now क्योंकि it is serving some purpose. Okay, as for the other parameter that I was telling about, it is a value parameter. So what this value parameter is going to do, okay, it is exceeding the range. If I want my slider to start from a specific place, so I can mention the value and then the slider will be by default present there only, and I can slide it anywhere according to my choice. Please give a thumbs up if everything is clear with respect to slider. Okay. Now let's talk about a drop-down menu. Okay. So the function that we will use for it, it is called widgets.dropdown. Okay. Now this function, it has some distinguishing parameters that you guys can use
to provide values here. So first parameter is going to be options. Okay. Options simply means ki, like what all values you are going to provide in this dropdown. So options parameter, it will always be a list. So for now, I'm providing these three values, 1, 2, and 3. Okay. Then again, you have the value parameter also here कि कौन सी value से you have to start. ठीक है कि कौन सी value firstly you want to highlight in your drop down. Also, you can give a description to your drop down. Description is again a string. Anything can be written here. And let's run it. So we got a drop down. 2 set is starting because the value that I have provided it is 2. Number is the description that I'm able to see here. Select anything. This is also right now not doing any purpose. So firstly, we are going to see what all different widgets can be created, and then we will be imparting it to some kind of graph. Okay. So this is a drop-down menu, and apart from drop-down menu, we also have a text area widget. So इसके लिए the function is widgets dot text area, and since in the text area also whenever you see a text box basically तो वहां पे कुछ लिखा होता है like with maybe with some very light color something would be mentioned there कि कुछ type कर दो या a particular thing maybe write your name or anything. So that value you are going to provide in a parameter that is called placeholder. ठीक है. Now you can mention we type anything, whatever message you want your text area to reflect. Again, this too is going to have a description, which is going to be a string value. So here I'm mentioning just text. Okay, so this is your text box, and you can write anything here. Okay, now let's talk about buttons. What all buttons you guys can add, and how basically you can orient the button inside these widgets that you're going to create. So the function that you will use, it is called widgets.button. And you guys can provide a description to your button. So here I'm going to write that let's say it is button 1. इसके बाद there is a parameter that is layout. Now this layout parameter, it is going to be basically concerned with key button का width कितना होना चाहिए. ठीक है, like what should be the width and the height of the button, and how much area basically it should be taking. So as layout, you guys can pass another set of function that is called widgets.layout. And in this function, there is a parameter that is called width. This width, it is going to be a string. So here you can pass a string. And in terms of percentage, you can write कि कितनी width आपको इस button को देनी है. This thing, it is created. So this is my button 1. अब इसके बाद let's create a few more buttons. तो मैं इसी कोड को कॉपी करके I'm pasting here and I'm changing the description. Let's create one more maybe. I call it. Okay. Now, if I run it all together, see, I'm not able to see all the buttons. मेरे को सिर्फ last वाला button दिखता है because only this code's output I'm able to see here. ठीक है. So let's display all the buttons all together. तो उसको करने के लिए what you guys can do, we have a function that is called hbox. Hbox means horizontal box when you want to align your buttons one after the other. So for widgets, the hbox function I am going to use. And this hbox function, it has a parameter that is called children. So its children parameter में you can define the children of this hbox, which are basically your buttons. So कोई भी दो buttons you guys can provide here. And for that purpose, I'm storing them inside a variable.
All right. So you guys can do B1, comma B2 for the first two buttons, and this is how we can orient these buttons together. Okay. Now, apart from this hbox function, we have another function as well, that is vbox. Basically, it stands for vertical boxing. कि मेरे को, like, I want to place these buttons vertically. So for that purpose, what I'm going to do, I'm going to create another hbox separately. And let's call it h1. And let's call this one h2. H1 has B1 and B2 as its children. यहाँ पे I'll be writing B3 and B4. Okay. Now with the help of VBox, I'm going to vertically align these two buttons together. So how to do that? Simple, use the function widgets dot VBox, and you guys can write what all children this particular box is going to have. And here I want H1 and H2 to be aligned vertically. So H1 comma H2. And now you can see that H1 basically these two buttons and H2 these two buttons, they have been aligned vertically above one another. Please give a thumbs up if you guys are understanding everything and there is no issue. Okay, thank you. Now, apart from buttons and apart from sliders and text area, we can consider that one more widget can be quite important in terms of representing information. And that widget, it could be like it could be a dialog box where I can switch the content of that dialog box by viewing different tabs. जैसे हम browser में करते हैं एक tab से दूसरी tab पे navigate करना. What if I have a dialog box for myself जिसमें I can navigate from one tab to another tab. तो उसके लिए let's design a simple dialog box. तो इसके लिए आई एम क्रिएटिंग अ लिस्ट दैट आई एम कॉलिंग टैब कंटेंट्स. तो जो भी मेरी टैब होंगी, जितनी टैब आई वांट टू क्रिएट, आई कैन मेंशन about them here. Let's call these tab A, B, and C. Okay. Now, what we are going to do, we want a few things. So basically, this tab contents, it is right now only a list. मेरे को क्या चाहिए कि जो मैं टैब्स क्रिएट करूं उन टैब्स पे this name it should reflect. ठीक है कि इस टैब का ये नाम है. So to do that, we have to use a function, and basically to process it, I'm going to use a list comprehension technique. List comprehension के बारे में we all know by now what it is, how to use it. So basically, one-liner loops जो होते हैं that you want to write, you can write them using list comprehension technique. So how to do this? For let's say name, or better to call it tab name. ठीक है? So for tab name, in tab contents, I want to convert it into a text that can be represented on the tab. So उसके लिए there is a function that is called widgets dot text, and here you can provide the description. हमें पता है कि description parameter जहाँ पे भी आता है, it basically takes a string that is designated as the name for that widget. तो यहाँ पे I can pass my tab name variable. ठीक है? This list is going to be passed to the tab. So I'm going to call it children. Okay, this is the terminology that we have been using with hbox only. So let's use it with tab as well. So this is your for loop, and this is your expression that you want to store in this children list. I believe list comprehension से related किसी को कोई doubt नहीं होगा. Can you guys give me a thumbs up if you understand कि how I have done it? Okay. All right. So इसके बाद what you have to do, you finally have to create a tab object. तो tab object बनाने के लिए use the function widgets dot tab and store it inside a variable. And now you have to assign these children of the tab all together. So उसके लिए this tab object is going to have an attribute children, और उसको मैं
ये children list assign कर रही हूँ. You guys can use different name if you feel that it can be confusing for you all. So children is the list जो मैंने define की है. This children is the attribute which a tab has. ठीक है. Now finally, अभी we are not going to display it. So we are going to set the title one by one. तो उसके लिए भी we need a for loop. So for I in range of all the children that we have. ठीक है. अगर 3 है तो 3 तक चले, 4 है तो 4 तक चले. We need to set the title. So tab dot set title function we will use. And in order to set the title to these tabs, we also need to specify कि कौन सी tab पहले आ रही है, कौन सी tab बाद में आ रही है. So I, it is an integer since it is running for length, which means I must specify कि पहली जो मेरी argument है, it is going to be number, which is denoting the serial of this tab. And second thing, I am going to assign a string value. ठीक है, basically जो भी आपका number है, उसी को you are going to convert into string. And in this manner, you are going to set the title to the tab. Let's see what I mean by this. एक बार display कर लेते हैं. तो यहाँ पे the tab is 0, 1, 2 and each tab it has a text area. अच्छा मैंने उल्टा कर दिया. I was meaning to assign this numbers here to the text area. Okay, you guys can basically reverse it if you want the same. So I have a 0 tab जिसमें there is a text area A. I have 1 tab जिसमें there is a text area B. Then 2 and there is a text area C. Okay, so a simple box we have created जिसमें we can switch between the tabs and basically जितने भी widgets हमने ऊपर सीखे हैं, the slider, the text area, the buttons, everything can be imparted right here. ठीक है? Any doubt with this? Yes, please give a thumbs up if you guys have no doubts. Okay, so what I'm going to do, I am dropping this code in the chat box क्योंकि my agenda was to make this like मेरे को tab name तो ABC चाहिए थे और मेरे को text area के नाम पे 0, 1, 2 चाहिए थे. तो I want you to reverse it और let's not drop the code. Please write the code from scratch, okay? क्योंकि not many changes are needed to be made here. Got it? Please give a thumbs up if you understand what to do. Okay. Create a dialog box जिसमें tab के नाम ABC हो और text area के नाम 0, 1, 2 हो. All right. Please drop a code once you are done with it. Modaj, where you want me to scroll exactly? Okay, the libraries ipywidgets.
If you guys need help with the function names, here is the code. Paras, it is fine for tab names, but the text area के नाम पे I wanted 012. Can you modify your code a little bit for that? अच्छा, all right. Consider this a homework. ठीक है? That you want to display 012 here and not the tab names only, A, B. Okay, consider it a homework. Got it? Please give me a thumbs up. Yes, guys. All right. It is a little task that you guys can do. Okay. One thing that I forgot to mention earlier. Basically, if you want to display the widgets explicitly, जैसे कि matplotlib में we had the show function. तो यहाँ पे we have a display function. उसके लिए there is a separate library that is ipython, I think, dot display, and from there we are going to import just the display function. Okay. Let's create a simple widget. एक slider बना लेते हैं. Nothing much, and I'll call it W. And to display it, I'll be using the function display and pass my widget. Okay. So this is how you can explicitly display a widget using the display function, जैसे कि show function होता है inside matplotlib. If you are going to display a widget twice, जैसे अभी मैंने यहाँ पे भी इसको display किया और नीचे भी display कर दिया, then one thing you will observe is that these two widgets are not linked together. ठीक है, तो जब भी कोई विजिट इंस्टेंस या कुछ भी मतलब कोई भी विजिट दो बार या दो से ज्यादा बार डिस्प्ले किया जाता है, देन these instances they get synced together. ठीक है, okay, one thing you guys can remember. Okay, so I guess basic introduction हो गया regarding IP widgets, and you guys have now you guys now know कि मतलब कौन कौन सी widgets you can include. इससे अलावा भी बहुत सारे होते हैं, but I found कि these are helpful, so I included these. Now let's incorporate this with a graph and let's see how we can make our graph interactive. तो जैसे Seaborn में already मतलब काफी interactive features हमारे graph में आ रहे थे. Can I add like to a matplotlib graph? क्या मैं कुछ widgets add करके उसको interactive बना सकती हूँ? So for that I will create a simple line plot. So I am displaying my objective here first. So we will be creating a line plot.
और उसके लिए विल बी टेकिंग टू वैल्यूज, एक m की लेंगे स्लोप की वैल्यू और एक c की लेंगे इंटरसेप्ट की वैल्यू। ठीक है, इन दो वैल्यूज के लिए हम स्लाइडर्स यूज करेंगे कि anyone who is using it, they can slide and change the slope, slide and change the intercept, and according to that the graph will change and it will be dynamic. Got it? तो इसको करने के लिए what you guys can do, you guys can start by creating two sliders first. तो for slope and intercept I'm going to consider float values. इसके लिए मैं slider भी float ही बनाऊंगी. So float slider, and you can provide a minimum or maximum value here. So minimum value I'm going to provide, let's say -10, और maximum value मैंने provide कर दी है let's say 10 ही दे देते हैं इधर. Then you also have the right to define the step count. तो मैंने step count define कर दिया कि एक एक वैल्यू, एक से दूसरी वैल्यू के बीच में कितना गैप होगा. So let's define a step count of 0.5. डिस्क्रिप्शन दे देंगे. So this one is for slope. इसी स्लाइडर को कॉपी करके लेट्स क्रिएट अनदर स्लाइडर एंड एवरीथिंग कैन बी सेम. लेट्स चेंज द डिस्क्रिप्शन टू इंटरसेप्ट. ओके, इसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं m, इसके लिए वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं c. अब व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू ले दीज स्लाइडर्स और उसके लिए मेरे को एक ओरिएंटेशन भी चाहिए होगा. तो ओरिएंटेशन के लिए हमने देखा है कि या तो h बॉक्स यूज कर सकते हैं या फिर v बॉक्स यूज कर सकते हैं. और ये सिर्फ बटन्स के लिए यूज नहीं होते, ये कोई भी आप विजेट किसी को भी आपको मतलब ले करना हो इन अ पर्टिकुलर मैनर, यू गाइस कैन यूज आइदर वन ऑफ देम. सो इसके लिए लेट्स डिजाइन widgets डॉट h बॉक्स और आई वांट टू डिस्प्ले पहले स्लोप देन लेट्स से इंटरसेप्ट. एक लिस्ट के अंदर आई हैव स्पेसिफाइड माय widgets, चिल्ड्रन widgets बेसिकली. सो इसका एक नाम रख लेते हैं, लेट्स कॉल इट h बॉक्स. ठीक है. Now we need to define a function for plotting as well. So plotting के लिए I am using a function, let's say line plot. ठीक है. और it is going to take value for slope and intercept, and then it is going to generate a line. So x और y दो variables मेरे बन जाएंगे, and x की value I'm going to take randomly, random dot rand function of numpy, and let's give a range of 10. And y की value we are going to take by multiplying slope with x and adding the intercept. ठीक है. गिव मी अ थम्स अप यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो. Okay, I believe everything is clear. After it, I am going to use plt.plot function to actually plot the graph. तो x और y simple दो values provide कर दी and I'm doing plt.fill. ठीक है. ये इतना हो गया. एक बार numpy भी import कर लेते हैं. I guess I haven't imported it. All right. अब function has been created, widget has been created. इसके बाद you have to link this function with these widgets जो आपने बनाए हैं. तो उसके लिए what you have to do, we use a function that is called widgets dot interactive output. ठीक है. Here you have to specify your widgets and you have to specify your function जो आप यूज कर रहे हो for plotting. तो मेरे फंक्शन का नाम है line plot. ठीक है. और मेरे जो widgets हैं उनको मैं डिक्शनरी में पास कर दूंगी. ठीक है. So dictionary में I am defining m as key और उसकी value is going to be m. ये slope के लिए हो गया and then c as key for intercept और value भी मैंने c ही डाल दी है. Since this is my output, I'll store it inside a output variable. और अब इसको display करने के लिए I am using the display function. इस फंक्शन की यहाँ पे एक्सप्लिसिटली नीड क्यों पड़ती है, आउटपुट तो मैं डायरेक्टली भी डाल सकती थी, बिकॉज आई नीड टू स्पेसिफाई कि ये तो मेरे widgets हैं for slope and intercept and this is my function that I want to like incorporate with these widgets.
और मेरे को इसके बारे में भी स्पेसिफाई करना है अबाउट द अलाइनमेंट एंड द ओरिएंटेशन ऑफ दीज विजेट्स। तो पहले डाल दो योर आउटपुट वेरिएबल विच कंटेन्स द फंक्शन एंड द विजेट्स, और फिर डाल दो आपका एच बॉक्स वेरिएबल विच कंटेन्स द ओरिएंटेशन। लेट्स रन द कोड। अच्छा, मैटप्लॉटलिब भी नहीं इंपोर्ट किया। So this is the graph that I got. If I slide, my slope is changing. ठीक है. If I slide for intercept, you can observe the values for the axis and the intercept is also changing. ठीक है. Do you guys get it? Can you please give me a thumbs up if it is understandable to everyone? एक 2 मिनट का ले लेते हैं and after that we will create a few more graphs to understand it better. ठीक है. Alright. Do I have everyone here? Please react with a thumbs up अगर सब यहीं पे है तो. Okay. So let's create a core graph and try to make it a little bit more interactive as compared to this one. उसके लिए I'll be using the iris data set. तो if you guys remember कि sklearn का iris data set we were using quite frequently. So let me just get the data set first and then I'll tell you what I'm going to do with it. Okay. So earlier I told you कि sklearn के जितने भी data sets होते हैं they are basically raw data set, एक dictionary के form में presented होते हैं. Have you guys figured out a way to convert it into a data frame? मैंने बोला था कि एक बार देख लेना. We have the target also, we have the
वेरिएबल्स फॉर बेसिकली सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ, और अपने पास कीज होगी रिलेटेड टू देयर टारगेट नेम्स एज वेल. सो डू यू गाइस नो हाउ आई कैन कन्वर्ट इट इनटू अ डेटा फ्रेम? अभी ये एक डिक्शनरी है. Please take 2-3 minutes, load this data set, and figure out how you can convert it into a data frame, pandas data frame. And if you are not able to do it, give me a thumbs up. अगर हो जाता है तो drop the code, otherwise give me a thumbs up. Got it? Firstly, please react if you got the question. Okay, now if you can solve it, drop it in the chat box. If you can't solve it, then give a thumbs up. Mordhvaj, Paras, Goyal, Himanshu, guys, can you please react? Okay. All right, please start attempting. Did you use the pip command pip install sklearn? Okay, what is the error that you are getting? एक बार pip install scikit-learn करके देखो फिर. हाँ, you use online Jupyter editor या फिर use Colab if you are using anything else. उस पे I don't think you will find any difficulty. पारस एक बार ये scikit-learn वाली कमांड रन करके देख लो. pip install scikit-learn. अच्छा, check if you can import the functions after installing scikit-learn. Load data set if you can import use. हो पा रहा है पारस?
Okay. Please figure out to convert this iris data set, which is kind of a dictionary, into a data frame. किसी और से हो पाया है तो you guys can drop the code. Give a thumbs up if you can't seem to figure out. Three more minutes to attempt it. Okay. Paras has figured out how to do it and I'll demonstrate for everyone. अभी इसमें एक column is missing. I'll tell about that as well. तो firstly मैंने आपको बताया कि the data that you have at the top, it is a dictionary. Now since you can see कि एक dictionary में key होती है और उसकी कुछ value होती है, means you can extract these values out. मेरे को मतलब किन values से है? मुझे ये array चाहिए क्योंकि ये मेरे 4 column की value है. ओके और इफ आई स्क्रॉल टू द बॉटम मेरे को ये टारगेट वाली वैल्यूज चाहिए क्योंकि ये मेरे स्पीसीज कॉलम की वैल्यू है. इफ यू रिमेंबर स्पीसीज कॉलम इन द डेटा सेट दैट आई प्रोवाइडेड, इट वाज ऑफ कैटेगोरिकल नेचर, मतलब कि उसमें स्पीसीज के नाम लिखे हुए थे. यहाँ पे जो है नंबर्स लिखे हुए हैं 0 1 2. ये इसलिए हुआ है क्योंकि दिस डेटा सेट हैज बीन एनकोडेड. एनकोडेड मीन्स कि उन्होंने लाइक कैटेगोरिकल वैल्यूज के लिए एक दूसरी वैल्यू लाइक एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करके दे दी है. This is because machine learning models, they are not capable of running on categorical values. You need to encode your categorical values and you need to specify them with some kind of numerical equivalent. उसके लिए encoders होते हैं like one hot encoder and get dummies encoder. तो we will be studying about that later. So this data set here, it has been encoded और इसीलिए आपको स्पीसीज के नाम नहीं दिखते. बट दिस इज माई टारगेट कॉलम जिसके ऊपर इफ आई वांट टू मेक अ मशीन लर्निंग मॉडल तो मेरे को इस कॉलम के ऊपर प्रेडिक्शंस करनी होगी. देन यू सी कि एक और की है रिलेटेड टू टारगेट नेम्स. ये टारगेट नेम्स कौन से हैं? जो स्पीसीज के नाम मेरे को अभी नहीं दिख रहे. ठीक है, सेटोसा, वर्सिकलर, वर्जिनिका. इनमें से 0 सेटोसा को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 वर्सिकलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 वर्जिनिका को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. एक और डिक्शनरी यू गाइस विल फाइंड रिगार्डिंग फीचर नेम्स. ठीक है, फीचर नेम्स मतलब जो मेरे 4 कॉलम में सेपल लेंथ
सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। ये जो वैल्यूज है मेरी, ये मेरी काम की वैल्यूज है, इनको मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है। सो लेट्स एक्सट्रैक्ट देम। आइरिस इज माई डिक्शनरी, और आई नो कि डेटा की में मेरा मेजोरिटी ऑफ डेटा प्रेजेंट है। So if I pass it inside the data frame as a value, and let's remove this column parameter first, ठीक है। अगर मैं इसको as value pass कर देती हूँ, so I'm able to generate a data frame out of these raw values, ठीक है। बट इस पे अभी मेरे को कॉलम का नाम लगाना है, और मेरे को वो स्पीसीज वाला कॉलम भी चाहिए। तो कॉलम्स के लिए पारस ने फीचर नेम्स वाला जो की है उसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, एंड you guys will get a list of all the feature names. So you can pass it directly where inside your column parameter, and then you will have feature names at the top of your data frame, ठीक है। कॉलम के नाम भी आ गए। अब जो मेरा टारगेट कॉलम है, दैट इज द स्पीसीज वाला कॉलम, उसके लिए जो की है दैट इज टारगेट। ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब इसको मुझे इस डेटा फ्रेम में ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए व्हाट यू गाइस कैन डू, आई थिंक आई फॉरगॉट टू like teach how to add a new column inside a data frame. So that is my bad. I'll tell you how to do it now. तो जैसे data is my data frame currently, इसमें if I want to create a new column, so I can simply write column का नाम क्या होगा, species is the column name that I want, or directly assign the value. So value is iris dot target. And it is as simple as this to add a new column inside your डेटा फ्रेम, ठीक है। तो अब मेरे पास स्पीसीज का कॉलम है जिसकी भी वैल्यूज आ गई। दिस इज अ कंप्लीट डेटा फ्रेम नाउ, जिसको अब मैं यूज करूंगी। प्लीज गिव अ थम्स अप इफ यू गाइस अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस नाउ, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पे एक सिंपल सा स्कैटर प्लॉट बनाते हैं, और उसको फिर हम इंटरैक्टिव बनाएंगे, ठीक है। So to construct the scatter plot on this particular graph, I'll create a function scatter plot के लिए, ताकि I can use it later with my widgets as well. This scatter plot, it should take two values, right? तो एक F1 ले लेते हैं, एक F2 ले लेते हैं, फीचर 1 और फीचर 2, जिसके बीच में स्कैटर प्लॉट बनाएगा। Firstly, I am initializing a figure using figure plt dot figure function, और उसके मैं dimensions डिफाइन कर रही हूँ 8 और 4 5 कर लेते हैं, ठीक है। Now let's plot the scatter function. तो उसके लिए I'll be storing this function inside a variable. Let's use scatter variable for this. तो plt dot scatter, और यहाँ पे हम वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। सो लेट्स प्रोवाइड वैल्यू फॉर एक्स। अब एक्स के लिए मैं अपने डेटा में से आई वांट टू एक्सट्रैक्ट f1। f1 here is going to signify my feature first. तो अगर if someone writes petal length, तो petal length के लिए डेटा में से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट हो जाए। ओके, डेटा इज माय डेटा फ्रेम। आई होप यू गेट इट। सिमिलरली फॉर y, आई वांट टू एक्सट्रैक्ट डेटा में से फीचर 2 वाला कॉलम। Here I am also defining a color to this scatter plot. तो कलर डिफाइन करने के लिए या तो आप एज अ होल पूरे ग्राफ को एक कलर, मतलब एक कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप किसी एक फीचर को यूज कर सकते हो, लाइक वी वर यूजिंग द ह्यू पैरामीटर इन सीबॉर्न, ठीक है। तो जैसे मैं जेंडर हाईलाइट कर रही थी फॉर द टिप्स डेटा सेट, ऐसे मेरे को स्पीसीज हाईलाइट करनी है फॉर दिस स्कैटर प्लॉट, ठीक है। तो डेटा में से द कॉलम दैट वी हैव फॉर स्पीसीज इज वेल स्पीसीज। तो उससे रिलेटेड मेरे को कोई डाउट नहीं होगा। आई एम नॉट टेकिंग अ सेपरेट वैल्यू फॉर दैट कॉलम, क्योंकि मेरे को स्पीसीज से ही हाईलाइट कराना है। ओके, एंड या दिस इज ऑल गोइंग टू बी इनसाइड माय फंक्शन। एक बारी मैं कॉलम का नाम चेक कर लूं, राइट है स्पीसीज। ओके, अब इसको लेबल दे देते हैं। सो plt डॉट एक्स लेबल, और एक्स लेबल में मैं क्या करूंगी, f1 में जो भी लिखा होगा that should be the label. Then plt dot y label, and the label for y will be f2, ठीक है।
इसमें एक लेजेंड भी दे देंगे, सो plt डॉट लेजेंड, क्योंकि मैं स्पीशीज को कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, सो आई वांट टू बी एबल टू डिफरेंशिएट कि कौन सा कलर किस स्पीशीज के लिए है। सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो नॉर्मली तो हम लेजेंड में एक लिस्ट पास कर देते हैं, दैट लिस्ट इज यूज्ड एज legend for our graph. यहाँ पे एक नया तरीका देखेंगे. So instead of mentioning a list, I'm writing this asterisk and I'm using this scat variable जिसमें मेरा graph store है. ठीक है. इसके ऊपर I'm using a function that is called legend underscore elements. अब ये करने से फायदा क्या हो रहा है कि इस स्कैटर प्लॉट में जो भी डेटा आई एम यूजिंग एज अ कलर, उसके लिए बाय डिफॉल्ट लेजेंड्स बन जाएंगे. आई डोंट नीड टू स्पेसिफाई इन अ लिस्ट की कौन कौन सी कैटेगरीज है, और क्योंकि यहाँ पे कलर विल बी imparted by default, so basically this asterisk it is going to link this scatter plot with the plot that I have defined, or I will be able to create legend elements based upon the color जो भी मतलब scatter plot में आएगा for the species. Got it? अब इसका एक टाइटल भी डिफाइन कर लेते हैं. सो टाइटल के लिए you guys are going to use f string यूज कर लेते हैं. तो f1 वर्सेस f2, फीचर 1 वर्सेस फीचर 2, और उसका के लिए ग्राफ जो है प्लॉट हो जाए. फंक्शन हैज बीन क्रिएटेड. फंक्शन को लेके किसी को कोई भी डाउट? कैन यू प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड इट. अब वैसे तो वी हैव like seen various ways to like create a widget and link it with basically a graph. तो मेरे को widget समझ में आ गया, मेरे को graph समझ में आ गए. I can link any widget with my graph. But यहाँ पे we are going to have a look at one of the easiest way. So एक function होता है interact, and what you guys can do, you can use this function directly. इस function के लिए अगर आपको अपने ग्राफ पे कोई विजेट क्रिएट करने हैं, यू हैव टू जस्ट पास द फंक्शन दैट यू आर गोइंग टू यूज एंड द लिस्ट ऑफ वैल्यूज जो आपकी पैरामीटर होगी, और इसके लिए एक विजेट क्रिएट हो जाएगा. लेट्स सी व्हाट आई मीन बाय दिस. तो विजेट्स डॉट इंटरैक्ट, मेरे फंक्शन का नाम है क्रिएट स्कैटर. ओके. अब यहाँ पे आई नीड टू प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ माई फीचर. तो आई एम यूजिंग टू वेरिएबल्स, एक f1 यूज कर रही हूँ मैं, और दूसरा मैं f2 यूज कर रही हूँ. दोनों में ही द लिस्ट ऑफ फीचर्स दैट आई वांट इज जो आइरिस डेटा फ्रेम में प्रेजेंट है. बेसिकली इफ आई यूज द फीचर नेम्स की, तो ये मेरे लिस्ट ऑफ फीचर्स, तो आई कैन डायरेक्टली प्रोवाइड देम f1 के लिए भी और f2 के लिए भी, क्योंकि किसी के भी लाइक वर्सेस ग्राफ मेरा बन सकता है. एंड आई एम रनिंग इट. जब मैंने इसको रन किया, सी हाउ इजीली आई एम एबल टू लिंक अ विजेट विद अ ग्राफ. मेरे को कोई एक्सटर्नली कुछ यूज नहीं करना पड़ा, कुछ बॉक्स वगैरह, या ऊपर जैसे हमने यूज किया था डिस्प्ले फंक्शन यूज किया था. डायरेक्टली इट हैपेंड. आई जस्ट प्रोवाइडेड अ लिस्ट ऑफ फीचर्स जो मेरे वेरिएबल्स फंक्शन में जा रहे हैं एंड माय फंक्शन इटसेल्फ. ठीक है. दिस इज द प्लॉट दैट आई गेट फर्स्टली फॉर सेपल लेंथ वर्सेस सेपल लेंथ. यहाँ पे कैन सी द पर्पल डॉट, दे आर फॉर जीरो कैटेगरी, ब्लू ones are for one category and yellow ones are for the second category. Let's change it. तो अब मैंने सेपल विड्थ वर्सेस सेपल लेंथ इसको कर दिया है. दिस इज माय ग्राफ. लेट्स चेंज इट अगेन. पेटल लेंथ और सेपल विड्थ. आप देख रहे हो कि अकॉर्डिंग टू माय ग्राफ माय लेजेंड इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू अ कन्वीनियंट लोकेशन. ठीक है, वो भी हेडेक मेरे को लेने की जरूरत नहीं है. ओके, सो यू गाइस कैन प्ले विद इट. कितने भी ग्राफ बना लो, whatever versus whatever, you will get a graph for it. Give a thumbs up if you find it useful and if you understand it. Okay. अभी इसी ग्राफ के लिए क्या बनाएंगे, एक स्लाइडर बनाएंगे. और स्लाइडर मैं किस लिए बना रही हूँ कि I want to control the number of samples that are plotted. For now, all of the samples in my graph, they are plotted. मेरे को कंट्रोल करना है. मैं चाहती हूँ अगर 10 सैंपल में प्लॉट करना चाहूँ तो सिर्फ 10 डेटा पॉइंट्स ही प्लॉट हो, और 100 करना चाहूँ तो 100 प्लॉट हो. तो उसके लिए आई एम गोइंग टू क्रिएट अ स्लाइडर. सो लेट्स डिजाइन अ सिंपल स्लाइडर फर्स्ट.
widgets dot int slider, and I am providing a value कि इनिशियल वैल्यू 50 ले सकते हैं, मिनिमम 1 हो सकती है, और मैक्स वैल्यू आपकी जो आइरिस डेटा फ्रेम की शेप है वो हो सकती है. आई कैन नॉट डिफाइन माई मैक्स वैल्यू बाय माई सेल्फ हियर, क्योंकि अगर मेरे पास उतने सैंपल्स नहीं होंगे तो मैं प्लॉट कैसे करूँ. तो मेरे डेटा फ्रेम की शेप इट इज 150 क्रॉस 5, तो मैं 150 से ज्यादा सैंपल तो प्लॉट कर ही नहीं सकती. सो व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट वैल्यू आउट ऑफ इट, एंड दिस विल माय मैक्स लिमिट. ओके, अब it will create a simple slider. Let's store it inside a variable and call it slider. और इस स्लाइडर का आप कलर भी मतलब इसमें वो कस्टमाइज भी कर सकते हैं. तो एक एट्रीब्यूट होता है इसके पास, स्लाइडर डॉट स्टाइल डॉट हैंडल कलर, और यहाँ पे यू कैन स्पेसिफाई द कलर ऑफ योर स्लाइडर. एक कलर होता है लॉन ग्रीन. लेट्स हैव अ लुक एट हाउ द स्लाइडर लुक्स लाइक नाउ. तो ये जो डॉट है स्लाइडर की, इट इज ऑफ लॉन ग्रीन कलर नाउ. तो ऐसे करके यू कैन इम्पोर्ट स्टाइलिंग एज वेल. All right, let's create the scatter plot. और अभी what I'll be doing, I am not using the previous function क्योंकि इसके लिए I need to plot it in a different manner. So firstly, we will start by plotting the scatter plot. X और Y के लिए we can get some values. तो यहाँ पे I am not, you know, I am not making this graph dynamic in terms of कि मैं किसी भी values के लिए plot कर पाऊंगी. ठीक है, यहाँ पे आई एम फोकसिंग ऑन नंबर ऑफ सैंपल्स, तो मैं ये वाला फीचर इसमें इंक्लूड नहीं करूंगी, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग द प्रीवियस फंक्शन. सो आई एम गोइंग टू मेक इट स्टैटिक फॉर एनी टू फीचर्स, बट number of samples can be changed. So data makes slice out the sepal length column. So this is my sepal length column. इसके लिए कर लेते हैं. And what I want to do, I am going to slice शुरू के 50 records. ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैं शुरू के 50 रिकॉर्ड्स इसके अंदर डाल रही हूँ. यू गाइस कैन डिफाइन द लिमिट इफ यू वांट, otherwise you can exclude it. Then for y as well, I am extracting शुरू के 50 रिकॉर्ड्स और कॉलम निकाल लेते हैं. लेट्स से पेटल लेंथ हमने निकाल ली. देन कलर भी इम्पार्ट करेंगे इसको. सो डेटा में से फॉर द फर्स्ट 50 रिकॉर्ड्स वट एवर इज द स्पीसीज उसके लिए प्लॉट हो जाए. Okay. And this is done. Let's store it inside a variable again, and I'm going to call it scat. Labels भी provide कर सकते हैं, तो मैं ऊपर से कोड उठा लूंगी labels के लिए एक बारी. So sure, it will be sepal length, and here it is going to be petal length. ठीक है, लेकिन हम हटा देते हैं, और यहाँ पे भी f string को हटा देंगे. Simply writing sepal versus petal. ठीक है, अब इसके लिए एक आउटपुट विजेट क्रिएट करना होगा, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द इंटरैक्ट फंक्शन टू लाइक इंटरैक्ट इट by default. तो आउटपुट के लिए आई एम क्रिएटिंग अ वेरिएबल, और widgets dot output function I am using. ठीक है, here you can see what I have got my simple graph, but this graph right now what it is doing, it is working only on specific set of values कि सिर्फ शुरू के 50 records ही आ रही हैं, and I am also not able to link my slider with it. ठीक है, क्योंकि मैंने कोड ही वैसा नहीं लिखा. Now this is a task for you guys. What you have to do, you have to link these two things together, slider और ये वाला जो फंक्शन है, और इसकी यहाँ पे तो कोई जरूरत नहीं होगी. All right. So yeah, so this
code that I have written here and this slider. I want you to make this code dynamic in terms of कि जैसे number of samples change हो तो ये उसी को as value ले, ना कि इस just इस 50 sample के लिए plot करे. This is right now static for this 50 samples. I want you to make it dynamic for as many number of sample as it is getting from this slider. ठीक है, और फिर उतने ही sample visualize हो जाए. For your ease, I'm going to like guide you guys कि कैसे कर सकते हैं. जैसे मैंने ये line plot वाला part किया है, you guys can do it in the same manner. Got it? कि H box create कर दिए, widgets create कर दिए, and then बाद में आप लोगों ने उनको link कर दिया. Try to do it if you guys are able to figure out कि this can be done. Drop the code in the chat box, otherwise I'll tell. Do you get the instructions? Please give me a thumbs up. Yes, guys. समझ में आ रहा है क्या करना है? ओके, तो ये वाला जो कोड है, आई एम ड्रॉपिंग इट इन द चैट बॉक्स. और दिस कोड इज फॉर द फर्स्ट widget that we created, the line plot one. Take reference from this code and try to do the same with this one. ठीक है, इसके लिए फंक्शन बना लेना प्लीज. I have not created the function also. Okay, take a 5 minutes break, then you guys can start. Once you start attempting the question, just give me a thumbs up. Okay, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर स्टार्ट कर लेना आप लोग.
Are you guys attempting the question that I gave? Please give a thumbs up. All right. अच्छा पारस, the graph is nice. It is working perfectly. लेकिन एक चीज आप नोटिस कर रहे हो क्या? Yeah, might be it taking time. Yeah, it is taking some time to like create the plot. No problem. That is fine. Okay. Anyone else who is able to figure out how to do this? Yes. Paras, Goyal, Himanshu, and Murdhwaj. Can you guys please let me know about your progress? If you are attempting it and you need more time, uh, tell me about it. Acha, Murdhwaj's code is not working. Okay, no problem. Every one of you can look at the screen now. I'll explain Paras's code. It is working correctly.
Okay, so this is the function that he created for the scatter plot. Let's have a look at this function currently. अब इस फंक्शन में एंड द फंक्शन दैट आई प्रोवाइडेड उसमें फर्क क्या है कि नंबर ऑफ सैंपल्स सिंस दीज थिंग्स दे विल बी जनरेटेड ऑन द फ्लाई बाय द स्लाइडर सो वी नीड टू टेक अ वेरिएबल फॉर इट एंड नाउ वी नीड टू स्लाइस पहले यहाँ पे मैंने 50 लिखा हुआ था क्योंकि मैं 50 सैंपल ही स्लाइस कर रही थी अब मेरे को नंबर ऑफ सैंपल के बेसिस पे स्लाइस करना पड़ेगा सो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशनड इट ठीक देन सेपल लेंथ एंड पेटल लेंथ दीज वर द टू कॉलम्स जिसके बेसिस पे मैं बना रही थी सो दैट इज एज इज इसमें कोई चेंज नहीं है after that, he has passed the values, created the scatter plot, labels and all, and plt.show. इससे पहले, he created the widget, which includes the number of samples, मतलब number of samples के लिए, which is an integer slider. Minimum value ये दे दी, maximum 150, since these are the इतना ही data अपने पास present है, और step count 1 दे दिया. Description भी दे दिया है कि number of samples. Okay, so this widget is fine. And this scatter plot is fine. ठीक है, individually everything is like perfect. Ab, where you have to link it. So for linking, he has used widgets dot interactive output function. This was the use that this is the one that we used earlier. इसमें he has passed the scatter plot simple. और जैसे हमने line plot के लिए slope और intercept पास किए थे इन्होंने number of samples पास कर दिए ठीक है and after that he created a vertical box for the alignment of this slider and we have a graph and a slider that works and it is changing the data points based upon the number that I provide. Do you guys understand it? It is like completely in the same manner that I demonstrated for line plot. बस ये एक scatter plot है और वो line plot था. Like the way to do this, it is same. Can you give me a thumbs up if you guys understand? All right, Motwat, do you understand this one? Yeah, I will look through it. Okay, okay. I'll also have a look at your code later कि इसमें specifically क्या गलती है and I'll text you regarding it. Okay. All right, guys. So I believe everyone has been able to figure out कि कैसे करना है. If you want for your own benefit, you guys can even make this more dynamic. जैसे ऊपर वाले पे sample length मतलब हम feature change कर पा रहे थे और इसमें sample change कर पा रहे हैं. तो maybe try incorporating both of them कि sample भी change हो जाए और feature भी change हो जाए. ठीक है? So if you want, you can do this little activity. अब इसके बाद I have a case study, though it is concerned with some complex topics जो machine learning का part है, but उसका थोड़ा बहुत part हम अभी करके देखेंगे और उस पे एक आधा widget हम बना लेंगे. Are you guys up for it? Or do you want कि मैं बस problem statement भेज दूँ and you guys have a look at it and you guys can attempt and like give the solution to me later? Yeah, I'm looking for suggestions. Do you want to do the case study now or do you want to do it later? Okay, you guys will attempt. So I will provide a detailed problem statement related to the case study. Though it is not a case study, I'll be sending a part of it. और मैं सारे steps I'll mention what I want to do. Please do it in a notebook and submit to me if you can. I'll really appreciate it. Also, since not much people are present today, we will not be continuing with web scraping. वो हम Monday को करेंगे अब. And Monday the session might last a little bit longer. Is that fine? Give me a thumbs up if everyone is okay with it. All right. Thank you, guys. If you don't have any doubt, you guys are free to leave.